Hi everyone, guys. I hope I'm audible and visible to you. Can you guys see me? Can you guys hear me? I'm Shweta Sharma, your VARC educator. If you can see me and hear me clearly, please confirm it once so that we can start with the session, guys. Just quickly have a look and tell me if you guys can see me and hear me clearly, and then we start with the session, guys. Am I audible to you? Am I visible to you? Very good evening, Krishna, Nitesh, and everybody who's there with me. I cannot see myself being live. So can you guys confirm it if you guys can see me? Okay, you can see me. All right, thank you so much for confirming that. We are just starting up with the session in a few seconds, guys. All right, I hope everybody's aware that the subscription plans are a little different today, right? So if you subscribe today, you have plus May 6 plus 1 for 18 months. It's going to be 18 months plus 2, that is 2 months would be free for you. And for 24 months plan, that is for 2 years, if in case you're subscribing for, then you would get 2 months extra for the same, right? So these are the benefits. For 2 years you have 4 months extra, right? So these are the benefits for subscribing to Unacademy Plus. In case you've not uh, joined us yet in Unacademy Plus, this is good time to join us, guys. I hope the slides are visible to everyone. Can you see the slides, guys? We have a session on para completion, an important session today. You guys can see the slides, please confirm it once to me because I still cannot see your conversations. A very good evening, Rinvit. How about you? How about me? What? A very good evening to everyone, guys. Can you see me? मुझे क्यों नहीं दिख रहा है कि तुम लोग मुझे देख सकते हो? I mean, I still cannot see myself in the app as well. Probably now, yeah, it will be visible. Right, so we have a session on para completion. I hope everybody's here. All of us are aware that we have very good plans for today. अगर आप लोग आज सब्सक्राइब कर रहे हो तो 6 months के सब्सक्रिप्शन प्लान के लिए you have 6+1. For 18 months के प्लान के सब्सक्रिप्शन के लिए you have 18+2, that is 20 months का प्रोग्राम है ये. And if you subscribe for 24 months plan, it is 24+4 months, right? The fee, the amount for these all the plans remains the same, but the only thing is that you have +1, +2, +4, that is 1 month extra है अगर 6 months के plan के लिए करते हो तो it's not 6 months anymore, it's 7 months. If you're going for 18 months plan, it's basically 20 months plan, and 24 months plan is no more 24, it's 28 months plan. तो अगर सब्सक्रिप्शन का सोच रहे हो, good time to subscribe in now. I saw that some of the students have even subscribed today. बहुत लोगों ने आज यूज किया है मेरा कोड, I could see, and many of you have subscribed to Unacademy Plus. तो अगर Unacademy Plus को सब्सक्राइब करना है, Shweta 18 is the code by which you can be a part of the Plus batch.
ठीक है, दिस इज द कोड यू कैन यूज एंड यू कैन अवेल इट एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%. जाओ सब्सक्रिप्शन पे और कोड यूज करो श्वेता 18, यू गेट अ डिस्काउंट ऑफ 10%. अगर अनअकैडमी यूट्यूब सेशंस के लिए करना है, देन इट्स श्वेता 18 live, right? So these are the benefits you have. You get a discount of 10%. Also, guys, if you're coming for Iconic using the code Shweta 18, you get personal mentorship, test analysis, and reports would be there. OMET preparation, right? If you're preparing for OMET, if you're writing OMETs, right, then the plan itself would be beneficial for you. And all the benefits of Plus will be included within the Iconic. So, अगर Iconic में आना चाहते हो, तो ये सारे benefits हैं. Nitesh, Vamshi, Rinvit, and who else is there? Krishna. I hope everybody is there in the Telegram channel, guys. अगर अभी तक Telegram channel पे नहीं subscribe किया है तो please कर लेना. Telegram channel पे आ जाओ सब लोग, so that you guys are aware of the upcoming sessions every day. ठीक है? And this is about the 6 months Iconic membership program. जहाँ पे 25,800 is the fee structure you have. It's a fee you have to pay for 6 months. But the benefits of joining the Iconic is not just the classes you can attend, but also you get 2 full-length mock tests for CAT per week, 3 sectional tests for LRDI, QA, VRC for each topic per week, and 2 full-length mock tests for OMETs per month. Right. Apart from that, you also get to see the detailed analysis of all the mocks and sectional tests you'll be taking in. ठीक है, तो अभी तक अगर सब्सक्रिप्शन नहीं प्लान करा है तो कर लो, क्योंकि प्लस बैच आने वाला है और ये सारे बेनिफिट्स है. ठीक है. अच्छा, दूसरा ये भी है कि इफ यू हैवंट रिटन द वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट येट गाइस, अगर अभी तक वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट नहीं दिया है तो ये कॉम्बैट होता है एवरी संडे 12 PM, 12 बजे हर संडे को होता है ये. अगर आप ये स्कॉलरशिप टेस्ट देते हो और इसमें यू रैंक समवेयर फ्रॉम 1 to 3 तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगा. इफ यू रैंक समवेयर फ्रॉम 4 to 10 यू गेट अ 75% स्कॉलरशिप. 11 to 50 में 50% स्कॉलरशिप, मतलब आधी फीस पे करनी पड़ेगी. मतलब अगर आप लोग 6 मंथ का प्लान कर रहे हो 16,400 तो सिर्फ 8,000 में आपका काम हो जाएगा. ठीक है. And if you rank somewhere from 51 to 200 to 25% scholarship मिल जाएगा, then you'll have to pay only 3/4 of your fee. So these are the benefits we have, guys. Right. Again, just a reminder, in case you're not there in the Telegram channel, do join us in the Telegram channel so that you guys are updated about the upcoming sessions every day. अच्छा, ये है CAT 2019 का सिनेरियो. ठीक है, CAT 2019 का सिनेरियो है. Just a second, guys. I'll back to the slide. I need to write something more. So let me just use some blank slides. It's gonna be better. Okay. तो ये है हमारा CAT 2019 का पेपर, जिसमें आप देख सकते हो कि पैरा जम्बल्स है, पैरा समरी है, ऑड वन आउट है. These were the 3 sections we had under TETA. TETA में you had पैरा जम्बल्स, you had पैरा समरी, you had ऑड वन आउट. ठीक है. 4 questions of पैरा जम्बल्स, 3 questions of पैरा समरी, 3 questions of odd one out. Total you had 10 questions of TETA. 10 questions of TETA. ठीक है. इस बार भी TETA के questions ऐसे ही आने वाले. If we talk about TETA this year, what is TETA? Let's talk about what is TETA first. TETA is type in the answer type. ठीक है, कल पैरा जम्बल्स था, आज हम पैरा कंप्लीशन करेंगे. So all of these question types are under type in the answer type. ठीक है, जिसमें आप क्या कर रहे हो, आप आंसर्स को टाइप करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपके आंसर्स आते हैं. ठीक है, मतलब आप यू नॉट गिवन एनी ऑप्शंस, यू बीन गिवन इन अ पैराग्राफ. ठीक है, या यू गिवन सम ऑप्शंस, यू गिवन सम सेंटेंसेस से 5 सेंटेंसेस, वो जम्बल्ड है, आपको बताना है कि इनका करेक्ट सीक्वेंस क्या हो सकता है. अनदर TETA बेस्ड क्वेश्चन कुड बी वेयरइन यू आर गिवन 5 सेंटेंसेस, यू हैव टू फिगर आउट कि अच्छा इनमें से कौन सा ऑड वन आउट है. राइट, which of the following sentences is odd one out, right? So you got to figure that out again by looking at the sentences. जो भी sentences हैं, ठीक है, sentences को देखो और एक family बनाने की कोशिश करो. Right? If I say A, B can be clubbed. If I say D, E can be clubbed. तो C is something which is odd man out. This is something which does not belong to the family. तो C is my answer. इस केस में आपको ऑप्शंस नहीं गिवन होंगे, सिर्फ एक ब्लैंक बॉक्स गिवन होगा, उसमें आपको आंसर टाइप करना पड़ेगा. Right, so that could be A, that could be B, C, D, whatever the options are, whichever you think that can be the best answer, you're gonna pick that and take it as your answer choice there. Right, so देखना ये है कि यहाँ पे क्योंकि options नहीं given होंगे तो हमारा time बहुत ज़्यादा invest नहीं होना चाहिए. ठीक है, though it's a question that treats you on a 0 negative marking. ठीक है, no negative marking is there, 0 negative marking है, but उसके बियॉन्ड 0 नेगेटिव मार्किंग तो ठीक है, बट उसके बियॉन्ड आप टाइम तो अपना इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें.
राइट? तो यू शुड नॉट बी पेनलाइज्ड इन टर्म्स ऑफ टाइम. टाइम इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं होना चाहिए. तो टाइम मैनेजमेंट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू टेक केयर ऑफ, राइट? ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसका सब लोग ध्यान रखोगे. टाइम मैनेजमेंट अलॉन्ग विद एक्यूरेसी, बिकॉज ऑल दीज MBA एग्जाम्स, ठीक है, इन सब में आंसर तो जल्दी आ जाएगा. कैट को छोड़ के, जैट को छोड़ के, जो थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस देंगे, एनमैट की बात करो, स्नैप की बात करो, IFT, इवन MAT, CET, MAT, यू माइट हैव रिटन, इन सारे एग्जाम्स पे आप लोग 100% श्योरिटी के साथ आंसर तो दे सकते हो, बट द पॉइंट इज उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम ले रहे हो. टाइम मैनेजमेंट इज समथिंग वी नीड टू टेक केयर ऑफ, विच इन केस यू फेल यू टेंड टू लूज अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? सो मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर एक क्वेश्चन को कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो. अगर मेरे पास टीटा का क्वेश्चन है, टाइप इन द आंसर टाइप क्वेश्चन है, और मेरे को पता है कि यहाँ पे सपोज देयर आर 5 sentences and I'm supposed to figure out कि okay which of the following sentences is odd one out, ठीक है, कौन सा सेंटेंस ऑड वन आउट है, कौन सा सेंटेंस डज नॉट बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर फैमिली, ठीक है, जो भी सेंटेंस मेरा ऑड वन आउट है, मुझे क्या करना है, मुझे इतना टाइम इन्वेस्ट करना है कि मैं सारे सेंटेंसेस को पढ़ पाऊं, ठीक है, बट आई शुड नॉट बी इन्वेस्टिंग इन बियॉन्ड the time which is actually required for a particular sentence or for a particular question. For example, if I say data based question mein, if you're investing 2 minutes per question, that's more than enough. You don't need to invest in a lot of time. 2 minutes per question आप invest करो, उससे ज्यादा invest मत करो. That is all you need to do. अगर आप उससे ज्यादा invest करते हो, naturally you will be ending up losing up your time for the rest of the questions, ठीक है. बाकी questions में भी time invest करना है, तो यहाँ पे time बहुत सोच समझ के, बहुत prudently इन्वेस्ट करना होगा, इवन इफ इट इज जीरो नेगेटिव मार्किंग, राइट? जो बाकी है, दैट इज योर टाइम इन्वेस्टमेंट, शुड नॉट बी समथिंग दैट पेनलाइजेस यू, राइट? सो वी हैव टीटा बेस्ड क्वेश्चंस. टीटा में हमने बात करी पैरा जंबल्स की, ऑड मैन आउट की, एंड देन देयर इज पैरा समरी. पैरा समरी में एक पैराग्राफ गिवन होता है, यू नीड टू फिगर आउट अच्छा बेस्ट पॉसिबल समरी क्या हो सकती है इस पैराग्राफ के लिए, राइट? And the last thing we're going to discuss today, that is para completion. Important topic है para completion. ठीक है? Para completion, as the name states, it can be a paragraph which has been written for you. ठीक है? कुछ लिखा हुआ है. ठीक है? Then there is a blank somewhere in between. हो सकता है एक blank यहाँ पे हो. एक blank आ गया बीच में. ठीक है? And then there is something which is given. Again there is a paragraph. ठीक है? और तुमको बताना कि इस ब्लैंक में बेस्ट पॉसिबल आंसर चॉइस क्या हो सकता है. आई विल बी गिविंग यू ऑप्शंस जस्ट टू सी हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली आंसर इट अप करेक्टली, ठीक है. यहाँ पे ऑप्शंस गिवन होंगे आपको ये देखने के लिए कि कौन से क्वेश्चंस को आप ठीक कर पा रहे हो व्हेन इट कम्स टू पैरा कंप्लीशन क्वेश्चंस, ठीक है. अनदर क्वेश्चन टाइप अंडर पैरा कंप्लीशन कैन आल्सो बी वेयरइन आई हैव बीन गिवन अ पैराग्राफ. मेरे को एक पैराग्राफ गिवन है, ठीक है, there's a paragraph given. इसमें जो लास्ट सेंटेंस था इसमें मैम फॉर कैट व्हाट वी नीड टू डू डिफरेंट. अभिषेक ये कैट का ही पोर्शन है, पैरा कंप्लीशन कैट में ही आ रहा है, वही डिस्कस कर रहे हैं हम, ठीक है. ओवरऑल कैट कैसे डिफरेंट है उसको भी डिस्कस कर सकते हैं, बट अभी फॉर नाउ वी टॉकिंग अबाउट पैरा कंप्लीशन विच इज अ मेजर पार्ट ऑफ कैट अगेन, ठीक है. कैट में आता है पैरा कंप्लीशन, तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, देन आई विल कम बैक टू योर क्वेश्चन, राइट. तो सपोज इसमें अगर लास्ट सेंटेंस मिसिंग है, यू हैव टू फिगर आउट कि ओके लास्ट सेंटेंस कौन सा हो सकता है. आई नीड टू एंटिसिपेट, आई नीड टू सी कि ओके यहाँ पे ऑथर अपने व्यूज देगा, यहाँ पे ऑथर की टोन ऐसी है, तो आगे भी मुझे कुछ ऐसा ही टोन चाहिए, राइट. तो ही इज गोना बेसिकली कंपेयर व्हाट वाज द ऑथर्स टोन हियर, what can be the tone in the last paragraph, what can be the tone in the last sentence. Accordingly he'll try to figure that out and give me the best possible answer choice, right. So this is another point which we need to take care of, that para completion may some sentences in the paragraph might be missing, which you need to figure out what can be the best possible answer choices, right. Are we good with this? Any doubts anywhere so far? कैसे करेंगे पैरा कंप्लीशन के क्वेश्चंस को डील, वो अभी देखते हैं. थोड़ा सा कैट और बाकी एग्जाम्स में अगर डिफरेंस की बात करें, जो कि अभिषेक ने पूछा है, कैट में गाइज यू हैव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, you have vocabulary which is asked very implicitly, मतलब आरसी में ही vocabulary पूछ लेंगे वो लोग ऐसे, ठीक है. और another question type can be पैरा जम्बल्स का क्वेश्चन आता है, पैरा समरी का क्वेश्चन आता है, पैरा ऑड वन आउट का क्वेश्चन आता है, और पैरा कंप्लीशन भी आता है, ठीक है. ये सेक्शंस आते हैं वर्बल एबिलिटी में.
बाकी तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन होता ही है. दिस इज व्हाट कैट वुड गिव यू. Majorly reading comprehensions and then some para jumbles, para summary questions, odd one out, and para completion questions. ठीक है. And all these question types would be under verbal ability. ये सब कहाँ से आएंगे? Verbal ability के questions हैं. Right. The other question type can be when you have something coming from NMAT, SNAP, IFT. इन सब में क्या होता है? NMAT, SNAP, IFT. These are the different set of questions, guys. A very good evening, Priyansh. Glad to see you joining us again. ठीक है. इन सब में दिए तो होगा ही. वर्बल एबिलिटी मतलब पैरा जम्बल्स है, पैरा समरी है, पैरा कंप्लीशन है, ऑड वन आउट है, ये सब तो आ ही सकता है. ठीक है. रीडिंग कॉम्प्रहेंशन भी आएगा, प्लस इस सब के साथ सीआर आता है अलग से, प्लस ग्रामर आता है जो कैट में डायरेक्टली नहीं आता ग्रामर. ठीक है. तो बाकी एग्जाम्स में you'll find this is the difference we have. Grammar is something which is very different, and then you have verbal ability, reading comprehension, critical reasoning, all these different set of topics we have. जो NMAT, SNAP, IFT बाकी सब में मिलेंगे. Good with this? Any doubts anywhere? If not, let's start with some questions, guys. Let's try this question. It's the first question we have. Just have a look at the sentence. This is where the blank is, and आपको बताना है इन सब options में से best possible sentence कौन सा होगा इसको fill in करने के. It's an easy one. Take 1 minute. Just give me a few seconds. I'll just be back, guys, at the meantime. Just quickly try this question out. Abhishek, I hope your question is answered. For cat, what is different? How it has to be a little different? Right? So try this question out. Let me know once you're done. We'll discuss it right. Okay, Saksham has given me a certain answer choice here. What about the rest of you? I was only 4 years old when my dad was working with elephants. मैं सिर्फ 4 साल का था जब मेरे पापा elephants, tigers और lions के साथ काम करते थे. When I was 14, I was already taking care of and raising baboons and lion cubs, leopard cats and other animals. At 17, I began working professionally with elephants. I did that for about 8 years and then gave it up. I've been working in the construction business since then. Okay, तो यहाँ पे मुझे लास्ट सेंटेंस नहीं फिगर आउट करना, मुझे ये वाला ब्लैंक बताना है यहाँ पे क्या आ सकता है. ठीक है. इससे पहले क्या आ रहा है और इसके बाद क्या आ रहा है. अगर मुझे एक सर्टेन ब्लैंक ढूंढना है कि यहाँ पे क्या आंसर हो सकता है, सी व्हाट इज देयर बिफोर इट, सी व्हाट इज देयर आफ्टर इट, एंड देन फिगर आउट द आंसर फॉर द क्वेश्चन. ठीक है. जस्ट लुक एट द टोन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटेंस. Look at the tone of this particular sentence and then answer. Check this out.
Yes. I was only 4 years old when my dad was working with elephants, lions, and tigers. When I was 14, I was already taking care of and raising baboons and lion cubs, leopard cats, and other animals. At 17, I began working professionally with elephants. I did that for about 8 years and then I gave it up. I've been working in the construction business for almost since since then, right? Then it talks about, okay, what can be the blank filler here? Which of the following sentences can be here? So can it be, yes, some of you going for B, some of you going for C, Calcutta. Yes, 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 Jagannath. Jagannath jacked up. I hope you are there in the Telegram channel as well, Jagannath. If not, please do join us in the Telegram channel on an academy. Right. They are the type of animal that demands food all the time, but nothing would happen to elephants. You have to love them unconditionally, right? And therefore, I have always had animals around me. Yes. Priyansh, yes. So, what should be the answer? Yes, what should be the correct answer? Some of you going for Bombay, some of you going for Delhi, right? So if I look at this particular sentence, it says I have always been working as a with animals. That's what it says. I was only 4 years old when my dad was working with elephants, lions, tigers. Then there is something. When I was 14, I was already taking care of and raising baboons and lion cubs, leopard cats, and other animals. So elephants and many other animals are just like people. Can we use this particular sentence here? A. What about A, guys? Can we use A here? Elephants and many other animals are just like people. Does he anyway talk about what elephants are and what other animals are? What are they like? This should not be the filler here. A should not be the answer here. Therefore, I always had animals around me. I was only 4 years old when my dad was working with elephants, lions, and tigers. Therefore, I always had animals around me. When I was 14, I was already. Yes, so this also cannot be the answer, right? B also cannot be the right answer, right, Priyansh? Yes, absolutely. Rinvit, no. So B cannot be the answer because when I was 4 years old, my dad had elephants, lions, and tigers. Therefore, I had elephants around me. No, right? अगर लगता भी है तो B को भी रख लेते हैं, right away eliminate नहीं करते. We can consider it again. C says you have to love them unconditionally. इस बात के बेस पे I was only 4 years old when my dad was working with elephants, lions, and tigers. On the basis of this particular sentence, can I say you have to love them unconditionally? No. So C is not the correct answer. C is something I can eliminate. Absolutely, Jagannath. D says, but nothing would happen to elephants. I was only 4 years old when my dad was working with elephants, lions, and this. But nothing would happen to elephants. When I was 14, I was already taking care of and raising baboons and lion cubs, leopard cats, and other animals. Okay. D. What do you think about D? Can it be the answer? Right? Let's keep this option. Yes, Abhishek, let's keep this option again. They are the type of animal that demands food. They are the type of animal that demands food all the time. When I was 14, I was taking care of raising baboons. फूड का या तो इस बात से कुछ कनेक्शन हो या इस बात से कुछ कनेक्शन हो, दोनों से कोई कनेक्शन नहीं. I'm left with two options. Most probably, if I talk about, I have two options left with me, Bombay and Delhi. Out of these two, which one fits in better? I was only 4 years old when my dad was working with elephants, lions, and tigers. Therefore, I always had animals around me. Or I was only 4 years old when my dad was working with elephants, lions, and tigers, but nothing would happen to elephants. When I was 14, I was already taking care of and raising baboons, lion cubs, leopard cats, and other animals. Right? तो अगर मैं options को eliminate कर दूं, तो मुझे D better लगेगा. ठीक है? D seems to be better if I eliminate the options. If I see it otherwise, तो B भी शायद ठीक लगेगा. But I always had animals around me. Again, doesn't fit in well. So answer has to be D, Delhi, for this one. I was only 4 years old when my dad was working with elephants, lions, and tigers. But nothing would happen to elephants. Elephants को generally कुछ होता नहीं है. When I was 14, I was already taking care of and raising baboons and lion cubs, leopard cats, and other. So answer has to be the statement D here. I hope this is clear to everyone, guys. If yes, if we're all good with the question, let's move ahead to the next one and see if we can figure out the answer for. All right, Priyansh, Jagannath, Abhishek, Rinvit, Bhavesh, Krishna, everybody, guys, let's move ahead to the next question.
Try this question out. Most firms consider exposed individuals to be elitist. Elitist मतलब topmost, right? देखो यहाँ पे last sentence क्या होना चाहिए. Just have a look at this particular paragraph. Let me know once you're done. We discuss it right here. Yes, Jack, what happened? Am I audible? Am I visible to you? I've given you a question. You have to figure out the last sentence. What can be the last sentence here? Right, Jack? The answer for is it the previous question you're answering, Jack? Or the one you just had, like the second question you're talking about? Everybody who's here with me, I hope you guys are aware that Cat by Shweta ma'am is the Telegram channel. अगर अभी तक इस पे नहीं आए हो तो प्लीज Cat by Shweta ma'am. अगर अभी तक नहीं एनरोल किया है आ जाना टेलीग्राम पे. Just have to use a link and be there. This is the link we have, Cat by Shweta ma'am. And this is the Telegram channel so that you guys are updated about the upcoming sessions every day. लास्ट डे पे कोई गुरु मंत्र टोनी स्टार्क तुम भी दे रहे हो क्या MAHCET? आज भी एक स्टूडेंट से मेरी बात हुई थी. इनफैक्ट दो स्टूडेंट से बात हुई थी. वन वाज चैटिंग विद मी, द अदर वन texted me and said, "Ma'am, I'm really tensed about my exam tomorrow. Give me some quick nuggets, some quick tips." अभी लास्ट टाइम पे आई वुड जस्ट से कि टाइम मैनेजमेंट को मत भूलना. कितना भी टफ क्वेश्चन लगे, कितना भी इजी क्वेश्चन लगे, इमोशनली ड्रिवन मत होना, राइट? Practically see what how the question can be solved. Eliminate the options. Don't just go emotionally कि okay सारे questions करें, RC के ये भी करना है. Don't do that. Time को manage मत करना भूलना उस time पे. That's very important, right? Yes. So please have a look at this question. It's a para completion question. If you're done, मैडम बेरोजगारी के वजह से टोनी स्टार्क के एग्जाम दे रहा है. हाँ वो तो बात है जैक. That's so true. Quick tips for reading comprehension, कुणाल. अरे कुणाल तुम तो वैसे ही, तुमको क्या टिप्स का रिक्वायरमेंट है? I don't know if you're the same Kunal who attends my session every day, but in case you are new here, I welcome you to the sessions. And quick tips for reading comprehension would be more like आज सुबह भी हमने एक RC का सेशन किया था. तो एक बार मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो जाओ टेलीग्राम पे. I'll share all the links and everything so that you can have some tips as well. एक सेशन उस पर भी कर सकते हैं. अदरवाइज फॉर नाउ आई वुड जस्ट से कि RC में पहले देख लेना कि कहाँ पे क्या गिवन है. जस्ट अ फ्यू सेकंड्स गाइस. अगर किसी को कुछ जानना है RC के लिए अच्छा रहता है कि सपोज 4 RCs है मेरे पास, ठीक है. इनका फर्स्ट पैराग्राफ और क्वेश्चन, फर्स्ट पैराग्राफ और क्वेश्चन ये सबका देख लो और देख लो कि किस RC को पक्का पक्का करना है. सपोज आई हैव 3 RCs, RC1, 3 and 4 व्हिच आई एम डेफिनेटली गोना अटेम्प्ट. RC2 है जो मेरे को अभी नहीं करना है, या इसमें से 2 क्वेश्चन भी हो जाए तो चलेगा, ठीक है. तो इस तरह से ट्राई टू डिसाइड कि व्हिच ऑफ द RC दैट यू गोना अटेम्प्ट. कौन से RC में आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है सॉल्व होने के, तो एक या दो क्वेश्चन हो जाए चलेगा, ठीक है. वैसा वैसा देखना पड़ेगा उस टाइम पे रीड करके. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग RCs आर कमिंग फ्रॉम योर फेवरेट टॉपिक्स. कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मुझे समझ ही नहीं आते हैं, ठीक है. तो किसको करना है, किसको स्किप करना है, वो हमें उस टाइम पे देखना पड़ेगा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. RC की हम बात कर सकते हैं आगे वाले सेशंस पे, बट फॉर नाउ सिंस दिस इज द सेशन ऑन पैरा कंप्लीशन, आई वुड रिक्वेस्ट कि जितने लोगों को पर्सनली कोई डाउट्स आ रहे हैं कुछ भी, प्लीज कनेक्ट विद मी. या तो मुझे कॉल कर लो या व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाओ या टेलीग्राम पे एक बार बात कर लो, सो दैट आई कैन अपडेट ऑल दी थिंग्स यू हैव, इश्यूज यू हैव, ठीक है.
We can even connect over a session in the evening. जो 9:30 वाला सेशन है उस पे तो सब लोग आओगे. 9:30 में we have a session on vocabulary quiz, guys. There's a special class on vocabulary quiz in the evening. ठीक है, ये सब लोग अटेंड कर लेना. इट्स अ फ्री सेशन, ये फ्री सेशन है. और जो भी तुम लोग के डाउट्स है रिगार्डिंग MHCT प्रिपरेशन, रिगार्डिंग एनी एग्जाम, प्लीज रिमेंबर दैट आई विल बी देयर टू एड्रेस ऑल योर क्वेरीज देयर टू. ठीक है, तो वहां पे भी हम लोग सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं इवनिंग में. But now let's have a look at this question. Yes, most firms consider expert individuals to be too elitist. ज्यादातर फर्म्स क्या कंसिडर करती है, एक्सपर्ट इंडिविजुअल्स को बहुत ज्यादा एलीट की तरह ट्रीट करती है. एलीट मतलब इफ somebody is doing really well, so you treat them to be, of very top notch quality. So most firms consider expert individuals to be elitist, temperamental, egocentric, and difficult to work with. Force such people to collaborate on a high risk state projects, and they just might come to fisticuffs. Right? What is fisticuffs? Fisticuffs is थोड़ा सा भी उनको tough projects देते हैं तो उसमें थोड़े issues होने लगते हैं. Even the very notion of managing such a group seems unimaginable. So most organizations fall into the default mode, setting up project teams of people who get along nicely. So result, however, is disastrous. Result is mediocrity. The result is the creation of experts who then become elitist, or naturally they drive innovations. What should be the correct answer? You love it, vocabulary quiz? Yes, Saksham. सब लोग आ जाना. 9:30 में we have the session. ठीक है, okay. So most firms consider expert individuals to be elitist. ज्यादातर firms जो होती है वो क्या करती है, you have various experts. ठीक है, AI expert आ गए हैं. You have data analytics में you have various experts. Right, you have experts जिनकी आप advice लेते हो regarding certain firms, regarding certain projects, regarding certain consultancy you're talking about. Right, so experts हर field में है. तो जितनी भी firms है वो क्या करती है, अक्सर expert individuals को बहुत कुछ मानती है, कि बहुत value करती है. To be elitist, temperamental, egocentric, इनको मानते हैं कि बहुत अच्छे होते हैं लेकिन difficult to work with होते हैं. Right, force such people to collaborate on a high stake project. तो जैसे ही आप elite, किसी elite बंदे से बात करोगे, उसको बोलोगे कि हमें इस project में काम करना है, तो क्या करेगा वो, कुछ ना कुछ issues लेके आ जाएगा. Right, force such people to collaborate on a high stake project, and they just might come to fisticuffs. Fisticuffs का मतलब है they might start rebelling for certain thing. They might start asking for a higher package for the same, or whatever the issue is, they might come with something or the other here. Right, even the very notion of managing such a group seems unimaginable. कैसे group, मतलब experts को manage करना ही अपने आप में काफी unimaginable feel होता है, क्योंकि ये लोग काफी egocentric होते हैं, temperamental होते हैं, elitist होते हैं और difficult to work with. ठीक है, even the very notion of managing such a group of people seems unimaginable. So most of the organizations fall into the default mode, setting up project teams of people who get along nicely. इस चक्कर में ज्यादातर टीम्स क्या करती है, वो ऐसे लोगों को टीम प्रोजेक्ट्स में रखती है जिनके साथ आप आराम से कनेक्ट हो सकते हो, आराम से बात कर सकते हो. वो लोग अपना नाटक नहीं करती, ईगोसेंट्रिक नहीं होते, टेम्परामेंटल नहीं होते, डिफिकल्ट टू वर्क विद नहीं होते, दे आर इजी टू वर्क विद, इजी गोइंग होते. उन लोगों को ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन टीम में रखना चाहती है किसी प्रोजेक्ट. इज द पैराग्राफ क्लियर टू एवरीवन, गाइस? इज द पैराग्राफ क्लियर टू एवरीवन? Any doubts anywhere? Anything we didn't understand? Are we good to go? If yes, please have a look at the options and tell me what is the correct answer. Answer मतलब आपको last sentence बताना है क्या होना चाहिए. Result, however, is disastrous. कि ज्यादातर क्या कर रही है organizations, fall into the default mode, setting up project teams of people who get along nicely. ठीक है, तो इसलिए अब organizations, क्योंकि वो परेशान आ चुकी है experts के tantrums देख के, उनकी ego को देख के, और उनके not easy to get along with, इस प्रॉब्लम को भी देखते हुए वो लोग काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं. और इसकी वजह से उन्होंने क्या सोचना शुरू कर दिया कि ओके, नाउ लेट्स सेट अप आवर ओन प्रोजेक्ट टीम्स. ठीक है, लेट्स हैव आवर ओन पीपल जो कि अपने आप काम अच्छे से कर लेंगे विदाउट गोइंग फॉर द एक्सपर्ट्स रादर. ठीक है, सो व्हाट इज द बेस्ट आंसर? द रिजल्ट हाउएवर इज डिजास्ट्रस. रिजल्ट डिजास्ट्रस है. रिजल्ट के बारे में बात कर सकते हैं क्या हम? रिजल्ट इज मीडियोक्रिटी, कि जहां एकदम अच्छी क्लास के प्रोजेक्ट्स हम लोग कर पाते थे, अभी वही एक मीडियोकर लेवल पे खत्म होता है. The result is the creation of experts who then become elitist. तो एक्चुअली वो करना क्या चाह रहे हैं, वो नॉर्मल लोगों से बात करना शुरू करते हैं, वो गेट अलोंग नाइसली, और धीरे धीरे उनको एलिटिस्ट में कन्वर्ट करते हैं. Naturally, they drive innovations. Are they driving innovations anyhow? Have a look at the options, guys, and give me the answer. I think everybody can answer this question. It's way too easy than I thought it to be. Perfect, Rinvit. Asim, yes. Sumit, yes, yes, yes. Perfectly.
गाइस, आर यू एबल टू फिगर आउट द आंसर? आई होप सब लोग टेलीग्राम चैनल में हो, अगर नहीं हो तो प्लीज 9:30 पे स्पेशल क्लास है, ठीक है, वोकैबुलरी क्विज का, आ जाना सब लोग, ठीक है। अन अकेडमी पे मुझे फॉलो कर सकते हो, अन अकेडमी के ऐप पे जाके कैट एंड अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स टाइप डाउन श्वेता शर्मा BARC, you'll find my name there. You can even text me, want to get some issues you want to get solved, वो भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, anything related to your preparation, do let me know. We have a Telegram channel as well, we have a WhatsApp group as well, अगर नहीं कनेक्टेड हो तो उस पर कनेक्ट हो जाना। 9:30 पे स्पेशल क्लास है, ये फ्री सेशन है, इसमें सब लोग आ सकते हो, प्लीज आ जाना इवनिंग में, ठीक है। ओके, yes, Kunal, Abhishek, Priyansh, Rinvit, everybody answered it correctly. So most firms consider expert individuals to be elite. ज्यादातर जो expert individuals हैं वो क्या करते हैं, ज्यादातर फर्म्स क्या करती है, एक्सपर्ट्स को ले आती है, एक्सपर्ट इंडिविजुअल्स को प्रोजेक्ट दे देती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है एक्सपर्ट्स के साथ कि वो बहुत ही एलीट क्लास की तरह बिहेव करेंगे, टेम्परामेंटल होंगे, ईगोसेंट्रिक होंगे, नॉट इजी टू गेट अलॉन्ग विद, नॉट इजी टू वर्क विद, उस सब की वजह से काम करते हुए बहुत सारे इश्यूज होते हैं, ठीक है। और उस सब की वजह से क्योंकि ये इश्यूज होते हैं, इवन द वेरी नोशन ऑफ मैनेजिंग सच अ ग्रुप सीम्स अनइमेजिनेबल, ठीक है। ये नोशन कि ऐसे ग्रुप को मैनेज कैसे करेंगे, ये सारी चीजें बड़ी मुश्किल लगती है। सो मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इसलिए वो क्या सोचती है, फॉल इनटू द डिफॉल्ट मोड, वो क्या बोलती है कि चलो ठीक है, हम लोग अपना ही प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं, सेटिंग अप प्रोजेक्ट टीम्स ऑफ पीपल हु गेट अलोंग नाइसली, तो हम लोग ऐसा टीम बनाएंगे जिसमें लोग अपने आप इजीली किसी चीजों को सॉल्व कर सके, ठीक है, अपने हिसाब से लोगों को चूज करते हैं। अब उस सब के बेस पे रिजल्ट क्या होगा, इट्स डिजास्ट्रस, इट्स मीडियोकर, द क्रिएशन ऑफ एक्सपर्ट्स हु देन बिकम एलिटिस्ट, कि लोग ऐसे बन जाते हैं कि वो स्टार्टिंग में बहुत एवरेज गोइंग पीपल होते हैं, and they then become very elitist, right? So what do you think can be the best possible answer choice here? Would it be A, B, C, or D? I see many of you answered it correctly, so the answer choice should be C, Calcutta, absolutely. The result is the creation of experts who then become elitist, right? Result क्या है, creation of experts, आप ऐसे experts बनाते हो जो बाद में जाके elite बन जाते हैं, so answer should be C, Calcutta for this one. Can it be D, Delhi? Naturally they drive innovations. We are not talking about they driving innovations, definitely not. We are not talking about innovation anywhere. अभी तक हमने innovation की बात करी क्या, नहीं करी, right? So we cannot talk about innovation right here. So can I eliminate D? Yes. Result, however, is disastrous. Can I say result is disastrous? No. Result is mediocrity? No again. So answer has to be result is the creation of experts who then become elitist. Okay? The result is the creation of experts who then become elitist. Right? So answer has to be C, Calcutta for this question. Is it clear to everyone? Are we all good with the question, guys? ठीक है, कहीं भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज आस्क मी. If you have any doubts, guys, please do ask me. I would love to answer your questions right here. Okay? Okay. This was C, Calcutta, because what we're talking about is experts हम खुद ही बनाएंगे average लोगों से और उन्हीं को हम elite class में convert करेंगे. That is what the paragraph talks about. Let's talk about another question. Let's have a look at this question, guys. Now, this is a question wherein you see what happens to our brain as we age is of as we age up, and that is of crucial importance not just to science but to public policy. By 2030, for example, 72 million people in the US will be over 65 years age. Double the figure in 2020, that is 2000, their average life expectancy will likely have edged above 20 years. However, this demographic time bomb would be much less threatening if the elderly were looked upon as intelligent contributors to society rather than as dependents in long term decline. The idea that we get decline as we grow older is just a myth, according to brain research that will encourage anyone old enough to know better. So, what am I doing? यहाँ पे guys ये question given है. Not exactly a question, but ऐसा लग रहा है कि कोई question given है. ठीक है? So this entire paragraph actually starts with a question. What happens to our brain as we age up? ठीक है? As we age, that is of crucial. So this particular question is of crucial importance, not just to science, but to public policy as well. ठीक है? And then he defines it. और फिर उसने चार options दिए. So which of the following sentences can be the last sentence to follow? Please have a look at the question. Then we discuss it.
मीडियोक्रिटी का मतलब होता है कृष्णा, मीडियोकर लेवल होता है ना कि नॉट वेरी हाई फाई। एलीट बोला था, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, जस्ट अ सेकंड गाइस, विल जस्ट कम बैक टू दिस क्वेश्चन। इफ वी टॉक अबाउट somebody being elite, elite मतलब बहुत ही हाई, हाई और टॉप क्लास, ठीक है, A1, that's what we generally say, very top class person, a very elite personality, right? So this elitist, if you see, this is when you're referring to something on the top, whereas mediocre is somebody who's more like an average person, okay? average in terms of Average in terms of the elite, or somebody who's of mediocre level, average. Okay, have a look at this question. Let me know once you're done. We'll discuss it right here. Take 2 minutes. Slightly tricky. Definitely, Sumit. Would love to see you. Let me know if you need some hints, guys. We have another set of questions. Last option is not visible. Okay, I'll write it down for you. It's not visible, yeah. Using computer models, like using computer models to simulate young and old brains, Ramsker and his colleagues found they could account for the decline in test scores simply by factoring in experience, right? So this should be more like factoring in experience. तो दिख रहा होगा, Ramsker and his colleagues. This is Ramsker and his colleagues. ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ. Found they could account for the decline in test scores simply by factoring in experience. ठीक है, थोड़ा ऊपर कर दीजिए, ऐसा हो सकता है क्या? अच्छा, मुझे तभी नहीं कैसे होता है. Just a second. Is it visible to you, like some portion of it? स्लाइड शो एंड करके ऊपर कर दीजिए. अच्छा, ऐसा. Is it better? Sorry, excuse me. Okay, वैसे मैंने लिख दिया है, तो I think it will be pretty much visible to everyone. Ramsker and his colleagues found they could account for the decline in test scores simply by factoring in experience. That is what the question says.
ठीक है, so if you're done, let's have the poll. I mean, not the poll, but let's have a discussion. Thank you so much, Krishna. All blessings with me. I want some of them to also be with some of my kids who have their exams tomorrow. Okay, shall we discuss the question, guys? I see most of us are done reading. Most of us are done understanding the passage, the paragraph, and the options. ठीक है, एक बार डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन है किस बारे में. So what happens to our brains as we age is of crucial importance. जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है, हमारे दिमाग को क्या होता है, वो कैसे काम करता है, ये क्रूशल इंपॉर्टेंट चीज है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है. नॉट जस्ट टू साइंस, केवल साइंस के लिए नहीं, बल्कि टू दी public policy as well, but to public policy as well. It's not just important to science, but to public policy as well. By 2030, अगर हम आज से 9 साल बाद की बात करें, for example, 72 million people in the US will be over 65. ठीक है, 72 million people जो है वो 65 से ज्यादा के हो जाएंगे. डबल द फिगर इन 2000. अगर आप 2000 की बात करोगे तो ठीक है, 2000 मतलब कि 2000 में जितना था, ठीक है, उससे दुगने लोग जो है वो 72 million people, मतलब if 36 million people were above 65 in 2000, now it's like 72 million people average, and their average life expectancy will likely have edged above 20 years. ठीक है, उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो भी कहीं ना कहीं एवरेजली बढ़ चुकी होगी 20 years से. However, then there is a contrast here. वो जब भी contrast आएगा, चाहे वो पैराग्राफ में हो, चाहे वो पैसेज में हो, be a little more careful, be a little more focused, guys. However, this demographic time bomb would be much less threatening. ये बात सोचना कि कितना ज्यादा एज बढ़ रहा है और कितने लोग कितने साल के हो जाएंगे, ये सब सोचने की बजाय demographic time bomb would be much less threatening if the elderly were looked upon as intelligent contributors to society rather than dependents in long term decline. होता है ना ऐसा कि अगर कोई 60 प्लस का है, उनके पास एक्सपीरियंस आपसे ज्यादा होगा. योर पेरेंट्स, दे नो अ लॉट अबाउट यू, दे नो अ लॉट अबाउट द लाइव्स, हाउ द थिंग्स वर्क, दे हैव सीन डिफरेंट सीजंस, दे हैव सीन डिफरेंट कल्चर्स. वो सबका एक्सपीरियंस उनके पास होता है. और हम लोग सोचते हैं कि ये बूढ़े हो चुके हैं, हम सोचते हैं कि दे बिलोंग टू डिफरेंट जनरेशन, दे वुड नॉट अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी, दे वुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग प्रेजेंटली, राइट. एंड we might go sometimes crazy, making them understand कि टेक्नोलॉजी तो ऐसे काम करता है, हमें भी फास्ट फॉरवर्ड होना चाहिए. ठीक है, but what we actually fall short of is the intelligence that these people who are actually aging up today were born some maybe 30 years earlier than we were born, maybe some 20 years earlier than we were born, so they have more experience than us. ठीक है, तो वो जो इंटेलिजेंस क्वेश्चन है जिसपे हम फॉल शॉर्ट करते हैं, उस चीज को हमें ये ना सोच के कि दे आर रादर एज अ डिपेंडेंट ऑन अस, we should rather think about the intelligence contribution we get to see from such people, right? So however, this demographic time bomb would be much less threatening. कि हालांकि इतना थ्रेटनिंग नहीं होगा अगर हम लोग क्या करें, एल्डरलीज को हम सोचें कि दे आर इंटेलिजेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू सोसाइटी रादर देन एज डिपेंडेंस इन लॉन्ग टर्म डिक्लाइन. कि हमारे ऊपर वो एक डिपेंडेंस से ज्यादा दे आर एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग to the intelligence, or maybe basically they're just sharing us the experiential knowledge, right? They're sharing with us the experiential knowledge जो हमें सिर्फ वही जनरेशन दे सकती है क्योंकि वो लोग उस टाइम पे थे. ठीक है, so experiential knowledge more than just the theoretical knowledge, and not considering them as the dependents is what the author is trying to say here. Now, considering all these facts, let's have a look at the options. What can be the last sentence here? Would you like to contribute the answer choices, guys? डिस्कशन से पहले कि आंसर चॉइस क्या होना चाहिए, would you like to share your answers here? Yes, Krishna, Priyansh, and Saksham, Asim, Rinvit, Jagannath, Sumit, Kadam, everybody who's here with me, Jack, Tony Stark, everybody, Abhishek, Bhavesh, everybody who is here with me, please answer your questions, guys. क्वेश्चन को एक बॉक्स में होगा. अच्छा, ये प्रियांश ने बोला था. ऑल राइट, ओके प्रियांश, व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ यू? व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर चॉइस? टेक योर टाइम, टेक 1 minute, टेक 2 minutes, but give me the correct answer choice. Idea that we get dumber as we grow old is just a myth. ये सोचना कि हम डम हो जाते हैं, ये सोचना कि हम डम हो जाते हैं as we grow older
right? It's just a myth according to brain research that will encourage everyone or anyone old enough to know better. Are we talking about somebody would get dumber as one olds? नहीं, हमने तो डिपेंडेंसी की बात करी है. अगर हम कोई नेगेटिविटी भी बता रहे हैं एज अप होने की, उसमें हमने ये नहीं बताया कि कोई डम हो रहा है या ज्यादा इंटेलिजेंट हो रहा है. rather we are considering them to be intelligent contributors, right? But what the author is rather saying is कि वो डम नहीं हो रहे, but हाँ अगर आप उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात करोगे तो नेगेटिव पॉइंट्स क्या होंगे? that people tend to yes, people tend to probably have they get dependent upon the children, right? Dependency की हम बात कर सकते हैं यहाँ पे, but we cannot talk about somebody being more what more dumber with age. No, so this is something we can eliminate. B says it is time we rethink that we mean by the aging mind before our false assumptions result in decisions and policies that marginalize the old or waste precious public resources to remediate problems that do not exist. Okay. It is time we rethink that we mean what we mean by age minding. What is aging? Mind before our false assumptions. कहाँ पे उसने false assumptions की बात करी? कोई assumptions की बात नहीं करी. उसने बस ये बताया कि जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, तो हाँ वो dependency बढ़ जाती है. That is one thing. But rather than focusing on the dependency, long-term dependency decline here, we should rather focus on the intelligent contribution of the elderlies. Right? So B also can be eliminated. We eliminated two options. C says many of the assumptions scientists currently make about cognitive decline. Cognitive decline मतलब जैसे कि सुनना बंद हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है, तो वैसे आपका माइंड जो है उसकी एक्टिविटीज भी धीरे धीरे कम हो जाती है. कॉग्निटिव माइंड को अगर सोचना है तो कोविड वाला टाइम देख लो. कोविड में सब लोग घर पे रहे हो, बाहर जाना बिल्कुल कम हो गया था, राइट? तो सबके कॉग्निटिव स्किल्स पे फर्क पड़ा है. Many of the assumptions scientists currently make about the cognitive decline are seriously flawed एंड फॉर मोस्ट पार्ट फॉर्मली इनवैलिड. तो जो भी कॉग्निटिव डिक्लाइन की बात यहाँ पे नहीं हुई है, ठीक है, एनीवे कोई भी ऑप्शन अगर ऐसा है जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहा है उसको वही के वही एलिमिनेट कर दो. So many of the assumptions scientists currently make about cognitive decline are seriously flawed and for the most part formally invalid. Yes, C is also incorrect. Using computer models to simulate young and old brains, Ramsecker and his colleagues found they could account for the decline in test scores simply by factoring in experience. What do you think about C Calcutta, guys? What do you think about C Calcutta? I would want to know from everyone what is your view about C Calcutta, the option number C Calcutta here. Many of the assumptions scientists currently make about cognitive decline and using computer models to simulate young and old. Yes. B or D लग रहा है अभिषेक. बॉम्बे तो डेफिनेटली नहीं होगा because it is time we rethink that we mean by age minding before a false assumptions result in decisions and policies that marginalize that old and waste precious public resources to remediate problems that do not exist. अच्छा, यहाँ पे पहली चीज तो हमने प्रॉब्लम्स की बात करी नहीं है. हम लोग बात कर रहे हैं कि उनका इंटेलिजेंट कंट्रीब्यूशन की तरह कंसिडर करें उस जनरेशन को rather than considering them as somebody who's dependent on us. But are we talking about any problems remediate problems that do not exist, something that we imagine कि हो सकता है ये प्रॉब्लम आ जाए, हो सकता है ऐसा कुछ हो जाए, है ना? तो ये तो डेफिनेटली नहीं होना चाहिए. C is out of paragraph absolutely. तो B भी नहीं होगा, A भी नहीं होगा, C भी नहीं होगा. Using computer models to simulate young and old brains, Ramsecker and his colleagues found they could account for the decline in test scores simply by factoring in experience. So yes, answer should be D, Delhi for this question, right? The answer should be D, Delhi for this question, and I hope this is clear to everyone. Computer models to simulate young and old brains, Ramsky and his colleagues found they could account for the decline in test scores simply by factoring in experience. So yes, answer has to be D, Delhi. Try one more question quickly and then we discuss. Male vanity is no different from females. Dash in face, a confident man no longer shies away from stating his deep interest in beautifying his appearance. अच्छा, यहाँ पे A option is here. ये type करते हुए somehow it came here, but this is your A option, and then you have B, C, D, E. Which of the following statements do you think can fill in here? And some of the options have more than one option. So देख लो, A, B, A, C, only C, all of the three can be here, or it can be none of these. Three statements are given to you, whether it's A, B, or C, right? And which of the following options can be filled in this sentence? You have to figure that out.
Okay, I'm assuming that we're done. Let's discuss the question. Vanity Saksham. Yes, 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 absolutely. Vanity is not just beautifying or makeup is not the point here. It's basically taking pride in whatever you are. Basically, in your achievements, it could be also in your appearance, but apart from that, it could also be when you're taking a lot of pride. Vanity is taking a lot of pride in your achievements. It can also be for your appearance, right? So male vanity is no different from females. Male vanity, अगर मेल का हम देखें कि किस तरह से इसको एक प्राइड फील होता है अपने ऊपर, ठीक है, it's no way different from females. Dash and face, a confident man no longer shies away from stating his deep interest in beautifying his appearance, right? So, Western cosmetic houses have spent millions of dollars researching this. Men want to look amazing too. Today's urban male spends as much on beauty products as the female counterpart. Men's in Nika. It is perhaps the fastest growing market segment of the feel good, look good industry. Which of the following option do you think can fit in best? Option A होना चाहिए, A और B होना चाहिए. Perfect, perfect. फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट सेगमेंट के बारे में हमें नहीं पता, मार्केट सेगमेंट की तो बात ही नहीं करी है. बट हाँ, अगर आप ए और बी की बात करते हो तो यस, दोनों ही ऑप्शन ऐसे हैं जो सही से इसके बारे में बात करेंगे. तो सी डेफिनेटली इज नॉट द राइट आंसर, बट यस वी कैन टॉक अबाउट ए, वी कैन टॉक अबाउट बी, राइट? तो सी इज डेफिनेटली नॉट द आंसर. Let's eliminate this option. Western cosmetic houses have spent millions of dollars researching this. Men want to look amazing too, and today's urban male spends as much beauty products as his female counterpart. मेल प्रोडक्ट जो है वो भी उतना ही स्पेंड करता है जितना कि फीमेल काउंटर पार्ट स्पेंड करता है. ठीक है, तो ए और बी दोनों ठीक है, बट सी डेफिनेटली इज नॉट द करेक्ट आंसर चॉइस. ठीक है, सी इज नॉट द आंसर. परहैप्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट सेगमेंट ऑफ द फील गुड लुक गुड इंडस्ट्री, नो. So answer has to be A and B. Okay, makes sense. Any doubts in the question, guys? Anywhere? Anything you want me to discuss with you? यस, अर्बन मेल की भी बात नहीं हो रही है. हाँ, ये भी बात है, एग्जैक्टली अगर आप इसमें स्पेसिफिकली देखो, मेल वैनिटी इज नो डिफरेंट फ्रॉम फीमेल्स. इन फेस अ कॉन्फिडेंट मैन नो लॉन्गर शाइज अवे फ्रॉम स्टेटिंग दी डीप इंटरेस्ट इन ब्यूटिफाइंग हिज अपीयरेंस. बट हमने हाँ अर्बन मेल्स की बात करी भी कहाँ पे है? अर्बन तो कहीं पे भी डिस्कस नहीं हो रहा कृष्णा. तो सिंस इट्स नॉट बीइंग डिस्कस्ड एनीवेयर, वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो एनीवे डजंट फिट इन देयर, राइट? बट टुडेज अर्बन मेल स्पेंड्स एज मच ब्यूटी एज हिज फीमेल काउंटरपार्ट. अच्छा, ये अर्बन मेल इसलिए बोल रहा है क्योंकि generally if you see, face confident man no longer shies away from strains his deep interest in beautifying his appearance. We are referring to generally male has been turned into urban male, right? That's a good point you've made, but there's no option that keeps up A without B, right? तो अगर हमारे को कोई और ऑप्शन ऐसा नहीं दिख रहा, देन वी एनीवे हैव टू पिक अप दिस ऑप्शन. सी तो डेफिनेटली नहीं है. ठीक है, कोई ऑप्शन है ऐसा जो ए है सिर्फ? नहीं है, राइट? वी हैव टू पिक समथिंग आउट ऑफ ए बी सी डी. तो देख के तो एक्चुअली नहीं लगेगा, बट अर्बन उसने स्पेशली इसलिए हाईलाइट किया है ये दिखाने के लिए कि पीपल हु आर एक्चुअली ट्राइंग टू बी ट्रेंडी, दैट स्टार्ट्स विद अर्ब्स. अर्ब्स मतलब सिटीज. ठीक है, जो शहर का लड़का है, शहर के जो मैन है, वो अपने को ब्यूटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं आजकल. द ट्रेंड इज चेंज. दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू फोकस हियर. Option is E. No, but then A is absolutely correct. No, Western cosmetic houses have spent millions of dollars researching this. Men want to look amazing too. This can be here. ठीक है, Western cosmetic houses have spent millions of dollars researching this. B तो definitely नहीं आएगा, but A आ सकता है. ठीक है, A आ सकता है. That means the answer should be A and B. ऐसा आंसर नहीं है ना जिसमें कोई भी नहीं होगा. E, A can be fit in, but A के साथ B को भी हम रख सकते हैं. B को क्यों रख सकते हैं? क्योंकि urban male से start करेगा. Right? Talk about the things happening, a kind of change happening. It would start with herbs and then to the towns. So yes,
A and B can be considered. So answer choice should be A as compared to E or any other option choice. A and B are the right answer choices here. Make sense? Are we good with this, guys? Okay. Any doubts anywhere? All right. So guys, just another point. D would not be there anyhow. C भी नहीं होगा यहाँ पे. ठीक है. Just another point I want to make. In case you guys are coming for the special class, 9:30 पे है special class. Vocabulary quiz है, सब लोग आ जाना. Also, do not forget to use the code Shweta18 for the subscription to Unacademy Plus. This is the code you can use for the subscription to Unacademy Plus, guys. Thank you so very much for joining in. I would love to see all of you at 9:30 for the vocabulary quiz, guys. It's a special class, so